Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, the most benevolent and kind. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know, in this pandemic situation of coronavirus, we are again going to conduct the online classes. And you know that in our previous talk, we also discussed the unit number 9, and we have already discussed this topic of acronyms, but again we are going to talk about the acronyms very clearly. As you know that in grammar we have the various and different topics of grammar, like we have already discussed the synonyms, the words having the similar meanings, and antonyms, the words having the opposite meaning. And today we are going to talk about the acronyms. We have already discussed this topic, but for your clear information, we are going to talk about this topic again. So acronym basically is a word that comes from the ancient Greek. अब जो acronym word है वो किस language का word है, किस language से आ रहा है, Greek language से आ रहा है. Acronym comes from the ancient Greek word acro meaning peak or the top, मतलब initial letter जो word होता है, and the ancient Greek word nam means name. Okay, acronym. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एक्रोनिम. एक्रोनिम्स की पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक्रोनिम्स होते क्या हैं. एक्रोनिम्स आर द वर्ड्स विच आर मेड अप ऑफ इनिशियल लेटर ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनके इनिशियल जो लेटर्स होते हैं उनसे हम एक्रोनिम बनाते हैं. द इनिशियल लेटर्स मेक अ न्यू वर्ड. इनिशियल लेटर एक न्यू वर्ड बनाते हैं विच कैन बी प्रोनाउंस्ड. समटाइम द इनिशियल अलोन डू नॉट मेक अ वर्ड. कभी कभी इनिशियल लेटर्स वर्ड नहीं बनाते हैं विच कैन बी प्रोनाउंस्ड, सो अनदर वर्ड इज टेकन फ्रॉम वन और मोर ऑफ वर्ड्स इन द ग्रुप. फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल जो एक्रोनिम्स आपके बुक पेज नंबर 189 पे दिए गए हैं, जैसे हमारा आपका एक्रोनिम आ रहा है POW. नाउ द इनिशियल लेटर इज़ PO and W. नाउ दिस थ्री इनिशियल लेटर्स, एक एक मतलब इनिशियल लेटर से आपका एक न्यू वर्ड बनेगा, प्रिजनर ऑफ वार. We have the another word like WHO here, the World Health Organization. On other page we have another acronyms also that we have already discussed in the class, like this one. Answer the following: how does the Superco got its name and what do the following acronyms stand for? अब ये जो acronyms हैं जिसे हमने पढ़ा था, AIDS का फुल फॉर्म क्या होगा, RAM का क्या होगा, RAM और AM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और नासा का क्या होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस टाइप ऑफ एक्रोनिम्स आर सपोज टू बी रीड है. एंड इन योर एक्सरसाइज अब आपको क्या करना होगा, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप एक असाइनमेंट बनाएंगे, सीरीज़ वाइज आप ये वर्ड्स लिखेंगे, फिर उनके सामने आप जो इनिशियल लेटर्स से जो न्यू वर्ड्स बन रहे हैं वो आप एक अच्छे तरीके से फेयर करके, मतलब अच्छे तरीके से रफ़ कापी पे आप एक असाइनमेंट बनाएंगे, वो लिख के सीरीज़ में फिर आप मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.